Hi, so today is end of session of 6th of July, and we are going to look into how the market reacted and what are the good things which happen in the market. One thing is, if you are a new trader, you don't have to actually look into this particular video. Rather आप सिर्फ सुनिए, और मैं जो जो स्टॉक्स के बारे में बोल रहा हूँ कि ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है, इसमें लॉन्ग्स बनी है, इसमें शॉर्ट्स बनी है, जस्ट इसके बारे में सुनिए. यू डोंट हैव टू, आपको ये चार्ट्स में क्या है, दो कैंडल का मीनिंग क्या है, ये सब आपको एकदम समझने की ज़रूरी नहीं है. So thanks a lot to a particular user Adi who gave me this feedback, and I can really understand. But the thing is, ये जो चार्ट है ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं इसमें समझता हूँ, इसको मैं इंटरप्रेट कर सकता हूँ. तो आप कह सकते हो ये सॉर्ट ऑफ मेरा कैंडल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ अ प्राइस, वॉल्यूम, ट्रेंड एंड स्ट्रेंथ इन जनरल. सो इस चार्ट में आपकी RSI, MACD सब कुछ इंक्लूडेड है, एंड हेंस ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा. वरना हर एक चार्ट का अगर मैं MACD, RSI, मूविंग एवरेज ये सब अगर करूँ, देन इट विल बी अ हेल लॉट ऑफ कंफ्यूज्ड इंटरप्रिटेशन. सो ये मेरे लिए ही इम्पॉर्टेंट है. गोइंग फॉरवर्ड आप जस्ट चार्ट में के बारे में, हर एक कंपनी के बारे में मैं जो बोल रहा हूँ आप वो सुनो, and then maybe it will be less confusing for you, and maybe you will get the top stocks and the top stocks which are going to give a good return if you take a long position, and also the stocks which are weak, and maybe these are providing a good opportunity to be short. So let's start. सो अगर आप ऊपर के ये पर्टिकुलर कंपनीज को अगर आप देखते हो, दीज आर द टॉप रनर्स इन टर्म्स ऑफ ट्रेंड. सो बेसिकली यू डोंट गेट, यहाँ पे आप देख रहे हो दिस कंपनी इज नेगेटिव, गुजरात गैस, राइट, बट स्टिल इट्स ओवर हियर कंपेयर टू अदर्स, जस्ट लाइक अदानी इज लेस. सो ये जो प्लेसमेंट होती है स्टॉक्स की, ये मेरे ट्रेंड एल्गोरिथम पे बेस्ड है. सो डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या हो रहा है. Just try to listen to what the companies and how the companies are posed at the end of the session, and maybe this will give you and the name of the stocks which you want to actually monitor maybe in the first half of tomorrow's session, right? So thanks a lot. Sorry for this introduction, but I think it was necessary. अब हम चलते हैं स्टॉक्स पे. तो ऊपर से हम देख सकते हैं AU बैंक में अच्छी मूव आई थी, लेकिन द ट्रेंड जो है वो बहुत ही अभी धीरे धीरे से ये लूज कर रही है. सो इफ़ यू आर लॉन्ग, ट्राई टू फाइंड अपॉर्चुनिटीज़ टू बुक प्रॉफिट एंड मूव अवे एंड ऑल दिस. ये गो थ्रू JCP पे भी ट्रू है, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे अभी जो मूव आएगी इसमें दैट वोंट बी दैट मच ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मूव. Whereas अगर आप देखते हो फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव, वन ऑफ द थिंग्स आई कैन से, जो मैं देख सकता हूँ कि कोई भी ऐसी कंपनी ऐसी है नहीं जिसमें लॉन्ग अपर वीक आप देख रहे हो. सो एवरी कंपनी हैड अ गुड सेल ऑफ, एंड नन ऑफ देम वर एबल टू क्लोज विथ अ बिग फैट कैंडल. एक कंपनी जो बहुत ही मीनिंगफुल मुझे दिख रही है वो है ट्रेंड, और ये शायद कल अगर 900 के ऊपर अगर मूव की तो मे बी ट्रेंड वुड बी वेरी गुड कंपनी फॉर मी टू ट्रैक. गोइंग फॉरवर्ड अगर आप देख रहे हो कोटक बैंक, ये भी आज मूव दी थी, बट इज़ नॉट एबल टू सस्टेन, एंड दिस इज़ ट्रू फॉर एवरी अदर बिग कंपनी. इट्स ऑल्सो ट्रू फॉर टाटा स्टील. मैं सुबह से ही बोल रहा था टाटा स्टील में बहुत अच्छी मूव आई थी, लेकिन टाटा स्टील में कोई पोजीशन नहीं बन रहा था. दिस इज़ ऑल्सो ट्रू व्हाट वी कैन सी, दैट none of the companies over here look good. Maybe companies like Alkem and LALPATHLABS went for an all-time high, and Ambuja Cement also had it has a big wick. बट स्टिल टुमारो ये कहाँ पे ओपन करती है उसके ऊपर डिपेंड करके शायद इसमें कुछ अप मूव आए. HDFC बैंक 1540 तक एग्जैक्टली गई, जो मैं 2 PM को बोला था, एंड दिस इज़ इट फेस्ड रेजिस्टेंस एंड इट क्लोज्ड अराउंड अबाउट 1532. इसमें फिर भी अभी ट्रेंड थोड़ी सी बाकी है और स्ट्रेंथ है HDFC बैंक में. लेकिन अगर आप ये देखते हो कि एम्फेसिस क्रिएटेड डोजी. सो बेसिकली ऊपर के इस अगर मैं इस आई एम गोइंग टू कंसिडर दिस 4 रोज, राइट. सो यहाँ पे आप देख सक रहे हो कि there's not much strength. वैसे ही अगर हम और ये सब बीच में ये सब कंपनीज हैं.
So here you can see this is a very good place where you can see companies like Wipro, HCL Tech, and Coforge, or so basically LTI. So this was also I had created shorts in LTI in the morning. ये तब से weak थी. So you can see that IT is somewhat in towards the lower end, and that is also true for big banks. Axis Bank में आप देख सकते हो बहुत अच्छी सेलिंग आई है, and it gave a very big long wick, and it's also true for APL लिमिटेड. ये भी हम लोग रेडार पे था. अनफॉर्चुनेटली ये 1020 तक जा नहीं पाई आज, और 1026 is actually the breakout level, so maybe you can note it down and try to track it. But you can see Vedanta, Jindal Steel, State Bank, मतलब the Bandhan Bank is coming out to be a very good candidate for short, क्योंकि इसमें धीरे धीरे ट्रेंड नेगेटिव बन रही है. सो गोइंग फॉरवर्ड में भी बंधन बैंक, अगर निफ्टी में वीकनेस या बैंक निफ्टी में कोई भी वीकनेस आई तो बंधन बैंक वुड बी अ वेरी गुड सेफ बेट, क्योंकि ऑलरेडी आज इसमें शॉर्ट की पोजीशंस बन रही हैं. Hindalco is also trying to reverse, and this is also true for Tata Consumer as well as Naveen Fluorine. IGL is one of very good companies, and maybe this is also going to take some support, and also this is also true for UBL. But short positions Nestle India में बन रही है, Sun Pharma में बन रही है, and these are all getting weaker. And also Godrej Properties, जो कल हम लोग को बहुत अच्छा पैसा दी थी, आज अनफॉर्चुनेटली उसमें अच्छा ब्रेकडाउन आया, लेकिन मे बी इट्स ट्राइंग टू गेट अ सपोर्ट राउंड अबाउट एट 14-20 लेवल्स. और PI इंडस्ट्रीज भी बहुत अच्छी मूव दे रही थी सुबह, बट अनफॉर्चुनेटली ये भी सस्टेन नहीं कर पाई. सो अगर आप नीचे की तरफ इस क्वाड्रेंट में इस स्ट्रक्चर में अगर आप देख रहे हो, सो यू विल फाइंड दैट अदर देन PSU नेम्स लाइक SBIN, you also see Bank of Baroda over here, और दिस इज़ ऑल्सो ट्रू फॉर इन्फी आज बहुत अच्छी एक मूव सुबह को देने वाली थी. सो बट अनफॉर्चुनेटली इट अगेन ऑल्सो क्लोज्ड इन रेड, एंड देयर वाज प्रॉफिट सेलिंग. बट अभी ट्रेंड वाइज मैं बोलूँगा कि आरती इंडस्ट्रीज इज़ लुकिंग रियली वीक, सन फार्मा इज़ लुकिंग वीक, नेस्ले इंडिया इज़ लुकिंग वीक, एंड सो इज़ ऑल्सो TCS. Someone tweeted that they have created some positions in TCS, so I would suggest to track 3220 levels and 3200 levels eventually, कि अगर ये अगर इसमें अगर कोई फर्दर वीकनेस आई, सो मे बी दोज अदर लेवल्स जहाँ से वो रिवर्स कर सकती है. नेशनल एलएम बहुत एक अच्छी ट्रेड थी, आज हमने इसको शॉर्ट किया था, ये 82 से 80 आई है, और ये हम लोग 4-5 दिन से ही ट्रेड में है. वी क्रिएटेड पोजीशंस राउंड अबाउट 77-78, वहाँ से 82 में कल बुक किए थे. आज 82 लेवल्स को ब्रीच करने का अगर ये कर नहीं पाई, एंड हेंस वी क्रिएटेड शॉर्ट, एंड इन द वेरी लास्ट आवर जब निफ्टी में वीकनेस आई, ये इसमें भी वीकनेस आई है. लेकिन मे बी गोइंग फॉरवर्ड नेशनल एलएम may get a very good support at 80 and 79 levels, and maybe it can reverse. Lekin going forward, I think Coal India is looking very weak. Lupin is also trying to get a support at 1140, but I think Lupin can give a breakdown, and this is also true for GAIL. Muthoot Finance is coming out to be a very good. We took a very good trade in Muthoot Finance in the last session. और कल हमने बहुत अच्छा पैसा बनाया था मुथूट फाइनेंस में, लेकिन मैं उसको छोड़ दिया था, और आज मैं देख रहा हूँ कि आज ये डिप की है टुवर्ड्स 1530 to 1525 लेवल्स, लेकिन शायद मुथूट फाइनेंस यहाँ से रिवर्स करके शायद ये कुछ अच्छा मूव शायद दे सकती है. एंड आई थिंक मुथूट फाइनेंस इज़ वन ऑफ द वेरी बिग कंपनीज जो आपको रेडार पे रखनी चाहिए. एंड एक्चुअली मुथूट फाइनेंस ऑल्सो मेड एन ऑल टाइम हाई टुडे, सो उसके बाद से अभी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, लेकिन आई थिंक मुथूट फाइनेंस वुड बी वन ऑफ द वेरी गुड कैंडिडेट्स फॉर रिवर्सल. टेक महिंद्रा इज़ डेफिनेटली, अभी हम लोग एकदम लोअर क्वाड्रेंट पे आ गए हैं, एंड हियर यू कैन सी दैट देयर आर names like Ashok Leyland was not able to say 126, and this was exactly what I tweeted some 2-3 days back. 126 के ऊपर अशोक लेलैंड सस्टेन नहीं कर सकती, and this is exactly what happened. और अशोक लेलैंड now is going towards 120, और अशोक लेलैंड में अभी भी वीकनेस है,
और इसमें जस्ट लाइक कोल इंडिया में वीकनेस है, लुपिन में वीकनेस है, गेल में वीकनेस है, अशोक लेलैंड में वीकनेस है। ठीक है, ये आप चार्ट नोट कर लिए। अच्छा, मदरसन सुमी में एक वीकनेस है, जो मदरसन सुमी 230 में एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रही है। एंड गोइंग फॉरवर्ड ये हमको देखना पड़ेगा, लेकिन मुझे लगती है मदरसन सुमी इज़ गोइंग टू ब्रीच टूवर्ड्स 222 लेवल्स मे बी वेरी सून। अभी ये 237 लेवल्स पे है। एंड ऑल्सो टेक महिंद्रा इज़ लुकिंग वीक। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस आज सुबह में बहुत बढ़िया मूव दे रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये भी 260 लेवल्स के करीब आ गई है, एंड मे बी दिस कैन रिवर्स फ्रॉम हियर। गोइंग फॉरवर्ड वी वे एबल टू क्रिएट शॉर्ट्स इन NMDC में। हमें 175 ये मैं सुबह 10:30 बजे का मार्केट वॉच में बोला था, NMDC इज़ अ वेरी गुड परफेक्ट शॉर्ट कैंडिडेट, एंड दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। हमने बायोकॉन को शॉर्ट किया था 396 लेवल पे, और ये 389 तक चली गई। मैंने बोला था वो 390 डेफिनेटली टच करने वाली है, एंड इट मे रिवर्स वेरी सून फ्रॉम 385 384 लेवल्स। GMR इंफ्रा ऑल्सो हैज़ अ रेजिस्टेंस एट 32, और आज वहीं से रिवर्स करके अभी 31.5 में आई है। सो गोइंग फॉरवर्ड टाटा मोटर्स डेफिनेटली इज़ वन ऑफ द काउंटर्स। मैं इससे 1-2 दिन थोड़ा सा दूर रहूँगा, बट गोइंग फॉरवर्ड आज टाटा मोटर्स के जिस न्यूज़ के लिए ब्रेकडाउन आया, आई थिंक दैट्स एक्चुअली नॉट अ बिग डील, and if that was a big deal, then it should also affect all other big automotive companies that we have. So, and since I work in one of them, so I really don't see that the semiconductor issue is such a huge issue. Rather, things are getting sorted out, and I am pretty much I can very well say that अभी टाटा मोटर्स आज जो लोअर सर्किट 311 में लोग पैसा बनाए, मैं बोलता हूँ मैं रिवर्स ट्रेड लूँगा, मे बी इन 1-2 days, ऑफ कोर्स नॉट इमीडिएटली, और उसमें मैं वो जो आज एक दिन में बनाए वो मैं उससे ज़्यादा पैसा बनाऊँगा, क्योंकि people actually are not understanding how Tata Motors is going to play out in a long run. Maybe it will correct. अगर आप Tata Motors 200 भी आ गया, it's not a problem, because you have to have these companies in your portfolio, and definitely you should be having Tata Motors. So अगर आपका फ्यूचर और ऑप्शंस में कोई दिलचस्पी नहीं है, जैसे मेरा नहीं है, आई नेवर ट्रेड ऑन दैट। सो अगर आपके पास कैश होल्डिंग है, अगर आप टाटा मोटर्स 360 में लेके बैठे हो, डोंट वरी, आई एम देयर विथ यू, एंड सो इवेंचुअली वी विल मेक श्योर दैट वी एंड अप विथ गुड प्रॉफिट इन मीडियम टर्म। सो लेट्स सी आज क्या होता है। अच्छा, यहाँ पे मारुति में भी आज अच्छी सेल ऑफ आई है। सो गोइंग फॉरवर्ड, if you want to jot down the name of the companies that are looking weak, go through JCP and AU Bank, इसमें आज अच्छी मूव आई है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस मूव की वीकनेस, ट्रेंड में वीकनेस दिख रही है। So I won't be making new positions just at the very beginning of tomorrow. और इसलिए आज मैं कोई BTST भी नहीं दिया. You can watch the video on. So normally I create a video at around about 2 p.m. for the last segment of the trade, and I was very much skeptical about Nifty because, and this is true for now also, because अगर आप ये upper quadrant में देखते हो, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बजाज फाइनेंस में अच्छे से सेल ऑफ आई है, एंड बेसिकली गोइंग फॉरवर्ड बजाज फाइनेंस कैन फॉल, बट अगर आप बजाज फिनसर्व कैन ऑल्सो फॉल, बट बजाज फाइनेंस मोर पोजिशंस आर बीइंग एडेड इन बजाज फाइनेंस देन बीइंग एडेड इन बजाज फिनसर्व. So going forward, I don't see any big, catastrophical difference between today and yesterday. आज जो मैं देख रहा हूँ कि अगर आप ऊपर क्वाड्रेंट में देखते हो, यहाँ पे HDFC Bank is one of the banks which has been able to withstand. और मुझे लगता है ये मैं ट्वीट भी किया था around about 2 p.m. that if you want to run and play the bank nifty move, stick with HDFC Bank, and this is exactly, you can see if you look Axis Bank में कैसा sell off आया है. Now let's have a look at Kotak Bank. Kotak Bank. Okay, Kotak Bank was also able to sustain, लेकिन इसमें आप देख रहे हो कि इसमें जो ट्रेंड है वो धीरे धीरे करके वीक हो रही है. सो मे बी 1760 1750 इज़ नॉट अ वेरी गुड प्लेस
holder for fresh trades to get initiated as of today. और एक्सिस तो हम देख ही चुके हैं. एक्सिस बैंक तो एकदम टोटली जो भी मूव आया था दिन में वो टोटली एकदम सपाट जहाँ पे ओपन किया वहीं पे क्लोज किया है एक्सिस बैंक ने. एंड इफ यू लुक फॉर ICICI बैंक, ICICI, we can also see ICICI has a huge wick, and still it's neutral. It's neither weak nor strong, but there was a huge profit booking from 655 levels. So this is all I have for you, and maybe going forward ICICI GI में भी एक मुझे लगता है कि going forward maybe this is also going to move for a long trade. और चोलाफिन भी हमने कल PTST किया था and we closed the trade exactly at 531 532 levels, और उसमें मैं आपको ट्वीट भी किया था maybe 530 levels पे मैंने क्लोज किया था. So that's all we have for the market. And also we can see HDFC AMC is also had a sell-off, and maybe going forward HDFC AMC is also going to dip towards 2850 levels अगर आप HDFC AMC में interested है. Metropolis also tried to move and we were able to book a very good trade in Metropolis जो हम कल से carry कर रहे थे. नहीं, आज सुबह से हम लोग 287 I don't remember, शायद ये नहीं, मेट्रोपोलिस का एक्चुअली परसों से हम लोग कैरी कर रहे थे फ्रॉम फ्राइडे, एंड वी वर एबल टू क्लोज एट 3000. सो इसके बारे में भी मैं ट्वीट किया था इवन yesterday and also today. So yeah, so that's all from my side. Bajaj Auto I think is a very good trades आप बजाज ऑटो में ले सकते हो. इसका बहुत अच्छा सपोर्ट है 4170 4180 और बहुत अच्छी रेजिस्टेंस है 4240 4250. और ये ट्रेड हमने लास्ट एक वीक में मल्टीपल टाइम्स ये हैं इन द इंट्राडे एंड दिस हैज़ वर्कड लाइक अ चार्म. और ये आज भी मैंने ट्वीट करके इस पर ट्रेड लिया था. And that's it from my side. Hope this video is going to give you more idea about the stocks which are looking interesting. Torrent Power भी हमने 475 में book किया, and now Torrent Power has dipped, but maybe 465 and 460 levels will again, or 464 levels पे हम लोग घुसे थे, and from there we went towards 475. And so this was also a good trade, and maybe it will also reverse. But going forward, TVS Motor weak hai, so basically stay away from auto. The main sentiment has been because of the sell-off which came in Tata Motors. So I would suggest to stay away from Hero Motor Corp also had some selling towards the end of the session. So from a sectorial perspective, I really don't think that there is much you can do because every stock is moving in a very narrow bandwidth, and even if you are not able to create shorts at the right level, so you won't be able to make money even in creating shorts. So hope you got an idea of the stocks which are weak. Let me just rephrase again. The stocks which are weak are Nestle India, Sun Pharma, Reliance. Okay, before we start that, Reliance is again a neutral. It tried to take a support at 2120 levels, and I think going forward Reliance is again there are no longs which are initiated, and there are no shorts. So from a trend perspective, it's just going nowhere. Yeah, so just to end and just to have a closing statement, going forward अगर आपको वीकनेस देखनी है तो आप देख सकते हो बंधन बैंक में, सन फार्मा में, नेस्ले इंडिया में, आरती इंडस्ट्रीज़ में, TCS में, IDFC फर्स्ट बैंक में, गेल में, कोल इंडिया में, लुपिन में, मदरसन सुमी में, टेक महिंद्रा में, अशोक लेलैंड में, एंड डेफिनेटली NMDC, बायोकॉन और टाटा मोटर्स में वीकनेस है एज ऑफ टुनाइट. और अगर आप स्ट्रेंथ देखना चाहते हो, सो बेसिकली ट्राई टू हैव लुक फॉर हिंद पेट्रो,
एंड बालकृष्ण इंडस्ट्रीज ये भी एक बहुत अच्छी एक आज क्लोजिंग दी है. सो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज वुड डेफिनेटली बी इन माय radar, एंड दिस इज आल्सो ट्रू फॉर ट्रेंट, से फॉर एग्जांपल, और अगर आप और एल्केम, डेफिनेटली एल्केम इज डेफिनेटली लुकिंग गुड. और या सो दैट्स इट. और एम्फेसिस में भी आप शायद कुछ देख सकते हो some movement in the first opening hour. So that's all. There's not much. Havels is also looking good. Havels में हम लोग पोजीशन आज सुबह हम लोग बनाए नहीं थे, लेकिन Havels is looking good. And so maybe Escorts is definitely trying to get a support around about 1200 region, and it is able to maintain that. So maybe Escorts can also move from here. IRCTC, try to book away from IRCTC. The trend is sort of reversing, and maybe it will again try to dip and try to take a support. So as of now, these are the few stocks which I mentioned, and this is how the market looks like. Voltas is weak, so you can actually think of creating shots in Voltas depending upon how it opens tomorrow. So hope you understood the stocks which are weak, and hope you will think twice before taking a fresh entry. And also I hope you understood which stocks are actually sort of having momentum, and it's just a matter of having a sentiment of the market which is going to change these stocks. So thanks a lot for listening. Other than the names of the stocks which I mentioned, the others, they have absolutely no trend. So if you are trying to listen to say for ITC, Indus Tower, McDonald's, Cipla, Wipro, HCL Tech, Power Grid, Hero Motor, Coforge, APL Limited, Amaraja Battery, LTI, UPL, Vedanta, Jindal Steel, State Bank of India, REC Limited, NTPC, L&T Finance Housing, so Hindustan Unilever. So basically they have absolutely no trend, and they have just trying to just consolidate and move in a narrow range without any trend getting created. So thanks a lot for listening, and maybe this video will give you idea of the stocks which are in my radar for tomorrow. डेफिनेटली अगर आप मुझसे निफ्टी डायरेक्शन पूछो तो मैं यही बोलूँगा कि दो द निफ्टी हैड अ वेरी गुड फॉल, बट गिवन दिस डेटा which I have in front of me, other than, so if I look for the in this lower segment, okay, Tata Chem is one of the companies which can reverse, so you should also try to track Tata Chem. So going forward here, you can see the companies which are there. So other than SAIL and say Lupin, Tech Mahindra is definitely a contributor, and yeah, that's it, and Tata Motors definitely. So basically Nifty उतनी भी कुछ ख़राब नहीं है, और शायद लोग ज़्यादा ही इस पे बोल रहे हैं, but going forward I really don't see any big problems. And you have to understand, upper quadrant में you have Bajaj Finance and you have HDFC Bank, एंड कोटक बैंक का भी थोड़ा सा वीकनेस, मतलब ट्रेंड में वीकनेस है, लेकिन स्टॉक प्राइस में वीकनेस नहीं है. एंड दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर ICICI Prudential Life. So go, and also Indus Bank is neutral, Tata Steel is neutral. So going forward, you see that the big names are going to drive this market. Bajaj Finserv is neutral, SBI Life is neutral. So you see that all the Nifty, a few of the Nifty constituents which I just mentioned, they are in the upper quadrant. And if you have HDFC Bank and you have Bajaj Finance, and if you have Kotak Bank, say for example, is able to maintain these levels, so I really don't think that people should be that much pessimistic about Nifty as of now, from the data जो आज रात में बनी है. Thanks a lot for listening. Hope this video is going to help you, and again I hope this video is going to help you in your trading tomorrow. Bye bye.